And this cultural biodiversity is very important with a soft impact on the mind and relaxation. So we are now exploring the collection and the field visits to the biodiversity of the Margilla Hills National Park. Margilla Hills National Park is the only park in the capital of Islamabad which is about 3,000 feet, so 1,000 meter. It's above the sea level. So the altitudinal variation, they have a diversity of the plants. There are the 4 important indicator species in the Margilla Hills National Park with respect to the plant biodiversity. The first one is this one that is called as Justacia editoda. Justacia editoda is an important plant of Margilla Hills National Park with a whitish flower. So this is the plant that is commonly known in this area is a Beckard, which belong to family Acanthaceae. So this is the native species of Margilla Hills National Park. Where you see is the with a greenish fruiting plants with a spiny nature, that is a thickened leaves, that is Caressa opaca. Caressa opaca in this area is commonly known as a granda. Granda is one of the important wild edible fruits that is used by the local communities of Margilla Hills National Park as a vitamin C. It's a rich source of vitamin C where the fruits are greenish in color, but later on they become brownish and then blackish. So they are the rich source of, yes, here you see these are the fruits. These are the fruits where the purplish fruits, and they are edibles, but when you eat you must identify the correct species, otherwise some plants are poisonous and toxic. So let's enjoy. रमेश के नाम से भी ये मशहूर है और रमेश तो हम हिंदी फिल्मों में सुनते हैं। हाँ हाँ, ये कोई मुझे लग रहा है कि मराठी फिल्मों में जो लोग वो गुंडागर्दी जो करते हैं, वो जो मराठी फिल्म में किसी बेवफा की खातिर ये जुनू पराज कब तक, बेवफा की खातिर ये जुनू पराज कब तक, रमेश जो तुम्हें बुला चुका है उसे तुम भूलो। You have used jasmine perfume, jasmine cosmetics. So jasmine is a very common cosmeceutical plant. So this is the also an indigenous species of this Margilla Hills, that is the Jasminum misnae. There are 3 species: Jasminum misnae, which is yellowish flower; Jasminum grandiflora, which is the bigger one flower; Jasminum umile. So this is the Jasminum umile. Umile means that is a aromatic. So this is this is an aromatic species. So let's enjoy in the nature with aromatherapy. Aromatherapy is basically the treatment of your depression, tensions, and a lot of problems by smelling such type of the plant which have a characteristic aroma. So this is a cosmeceutical plant as well as a species that is used in aromatherapy by the local communities. Because the local communities, they are close to the nature, so they become more relaxed than the city's people. Yes. The second one species of this region is this is a tree that is called as Acacia modesta. Acacia modesta is a important plant which is adopted to the Margilla Hills National Park that belong to family Mimosaceae. So this is the one of the species that is commonly used by the local communities as a fuel species. This is a Acacia modesta. जलती हुई तीली और सिगरेट ना गिराएं, जंगल में आग लगाने से परहेज करें। एनवायरमेंटल डायरेक्टर रीजनल सीडीएस तावन। हाँ, तो ये बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कीप इन माइंड कि हम प्लांट की प्रोटेक्शन का, एनिमल्स की प्रोटेक्शन का, कंजर्वेशन का ख्याल रखें, क्योंकि जब फायर हो जाती है तो आग लगती है, जब फायर होती है तो फिर आपके एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, मैमल्स, हर चीज़ इफेक्ट होते हैं. सो कीप enjoying a nature with respect to the nature, conserve the nature and harmony with nature. This is important aspect for the conservation of the biodiversity. Where you have a forest, where you have ecology, ecosystem, you must develop the indigenous nurseries for more cultivation of the trees, for more cultivation of the shrubs. So the nurseries of animals, nurseries of plants, nurseries of shrubs, that's an important step for the restoration of biodiversity. So nurseries are very important for conservation in this area. पेलो पक्कियानी पक्कियानी वे चुनो रले जा होरा परियां टोले टोले हुस्न दिया दे वे हिले परोवे होरा परियां टोले टोले
हुस्न दिया ले में नहीं ले बरोले रात ठड्डियां ठार गोला तत्तियां नी वे चुनूर ले जा of algal biodiversity, marine algae, फ्रेश वाटर एल्जी एंड टेरेस्ट्रियल एल्जी। सबसे ज्यादा जो इग्नोर की जाती है वो टेरेस्ट्रियल एल्जी है। टेरेस्ट्रियल एल्जी जो है उसमें रॉक्स के ऊपर जो होती है उसको लिथोफाइटिक एल्जी कहते हैं। Lithophytic algae that are present on the rocks. And the algae which are present on the stem is called as wood algae or bark algae. Bark algae, foliose algae. Yeah. There are 50% of algae, terrestrial algae are unidentified because Yes, this is important. because they have due to the drought condition two algae look like same. Because Morphologically they are similar. So it is very difficult to identify morphologically terrestrial algae. So we have to move towards the genetic basis, molecular basis, DNA, molecular DNA, systematics, and molecular system to identify the algae. So the study of the algae is called as phycology, और algae is another important area of the biodiversity. और खासकर जो पाकिस्तानी फ्लोरा है उसमें algae they are remains ignored throughout the history. Biodiversity. Season pelas. अवसर कमी यौमा खमसर तोर कोनो क्या बदे मोर पर यारत नो कर जमीना ओ रसूलुल्लाह तब हलवे नो इस्ताउमात मकानो नी ज़ियारतना। If they belong to any specific geography, the origin of their nature might be the species which are come from the Bengal, so they are called as Ficus bengalensis. Some are originated from India, they are called as Rosa indica. Some are originated in Balochistan, for example Barbarus balochisainica. Amjad already said about the endemic species, that the margala. Which species you Bungardia margala. Bungardia margala, that is originated from margala. So the Lantana Camara might be the regions in India and Sri Lanka. So that's why the origin was South Asia, but it is under cultivation in Europe. Then the Europe it become escape and naturalized, and now in Pakistan and South Asia and Central Asia and China. So it is a exotic and alien species. Medium-sized trees. This is called as canopy. C-A-N-O-P-Y, canopy. Canopy is the uppermost continuous layer of the branches of the trees when they mix up each other and they make a shadow. This is called as canopy. Canopy cover. So this is a very unique cover in some national parks, botanical gardens. But these canopies you found in the moist temperate area, Brazil, Thailand, have recreation points and shady places. So this is a canopy of more trees. The upper tree that is called as the Siltus eriocarpa, that is belong to family Almasi, Siltus eriocarpa. And another side you see the other trees, that is the Acacia modesta and some other plant, that is the Cereus opaca. So this is the richest canopy of these two trees. Here you see another important tree where the pinkish flowers. Yes. You see of that. So this is another important native species of a tree here, that is called as Bohemia variegata. Yes, that is commonly known as Kachnar. This is a Bohemia variegata Kachnar which belongs to family Caesalpinaceae. The unripened birds are used as a wild vegetables among the people of Margalla Hill National Park. कभी आपने कचनार की vegetables खाई हो, कीमा और इस तरह की. So this is a tree. And here you see the dried fruits of here you see this is another important tree, but the fruits are dried. This is called as plant Albizia procera. Albizia procera is also known as cirrus tree, and this fruit is the characteristic fruit of Albizia, which is called as Lomentum. Lomentum is a diagnostic factor of family Leguminaceae. So this is the Lomentum of Albizia procera, which is called as a white cirrus tree. Another Urdu or language or your local language, it is called as Shri. These are the leaves of Albizia procera.
And also you observe the mixed soil, that is the dried soils with a stone. So this is the characteristic feature of the Margilla National Park, where the soil is not a clay, not a loamy. It is a mixed type of the soil that contains stones, that contain the red soils, that is the oxidized soils in this region. Here you see, this is another important tree, the bigger one tree. Some boys may come up here to show your interest, how you are linked to the nature. So this tree is basically important exotic tree, that is the Brassonacea papyrifera. Brassonacea papyrifera is a mulberry tree, that is a paper mulberry, which is the exotic species. And exotic species, you know that they cause allergy during the month of February and March, where the pollen burst. Some people may infected the flu, cough, asthma, allergic reaction. So the paper mulberry is the exotic species in this national Margilla National Park. So this is the exotic species we have discussed in the class about the exotic and alien species. Points, सीड बैंक और जीन बैंक, जब इनका मेचुरेशन टाइम हो जाता है, फ्लावरिंग हो जाती है, सीड्स गिर जाते हैं, तो जो इदारे होते हैं, उनके जो डिपार्टमेंटल पीपल्स होते हैं, दे कलेक्ट द सीड्स एंड दे कंजर्व द सीड्स, दे स्टोर द सीड्स इन द जीन और सीड बैंक्स, एंड देन at the arrival of the favorable condition during their spring, during monsoon, they cultivate these indigenous trees. So the nursery is a very important for conservation of the biodiversity. Another threats to the biodiversity. Here you see, these are the felling of the trees either by natural ways or either by cutting of the forest trees. So this is the Kachnar, indigenous plant of the Margilla National Park, with the characteristics pinkish flowers sometimes. Yes, it's very good. So these, when the flowers are not open, just like these. So these are the unripened flowers, the floral buds. They are used as a wild vegetable. That is a Kachnar that is mixed with mince meat or sometimes chicken. So this is our characteristic vegetable, and this is also a characteristic aroma of this flower, and it is a characteristic I think the corolla of family Leguminosae or Scissorpinaceae. So this is a wild vegetables in this area. Another important is this plant, that is Lantana camara. Lantana camara is also exotic European species. It is now naturalized, but it is under cultivation in Europe. So this is also exotic species of the Margilla Hills National Park. The characteristic shape of the leaves, that is a heart-shaped leaves. This is called as cordate leaves. When they are arranged alternatively, this is called as alternate leaf arrangement. Sometimes they are right angle to each other, opposite to each other. That is called as opposite arrangement. When they are pairs in opposite, they are called as decussate arrangements. Yes. Leaf shape is just like the foot of the camels. So that is called as camel-footed plants. एयर्स आपको वाइट वाइट नजर आ रहे हैं, इसको हम स्पेट सरफेस कहते हैं, ये सूट कहते हैं, और इसके लीव जो है वो डाइसेक्टेड लीव्स होते हैं. लीव लेमना इज डाइसेक्टेड बाय अ सिंपल लीव. वो बहुत सारे प्लांट इस्लामाबाद के एरिया में मेल प्लांट को काटे गए. अभी ज्यादातर जो प्लांट हैं आपको अंदर फीमेल प्लांट्स हैं, तो फीमेल में पॉलन्स नहीं होते हैं, तो इसलिए दे आर नॉट एलर्जी काजिंग. और ये एक दफा काटे तो कहीं उधर से निकल आएगा, इसकी अंदर वो इतना रूट प्रोपेगेशन डेवलप होती है. एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था कि एलर्जीनिक प्लांट्स ऑफ इस्लामाबाद, कि कौन से प्लांट्स है जिनसे एलर्जी काज होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च. और उसमें हमने फिर इसको दैट वाज वेरी क्या उसको कहते हैं, dangerous. Here you see another important tree on your back side. This is the tree that is called as Ficus liquor. This is a Moraceae family. Moraceae is also important family. That is a Ficus liquor, and you see the characteristic fruit. They are just arranged on the branches. So this is just like जो समाल अंजीर होता है ना, उसी तरह की चीज है. तो Ficus liquor, लिकोर इसलिए इसको कहते हैं कि अगर इसके पत्ते को कोई छलांग लगाए तोड़ेगा तो अगर आप इसको तोड़े ना, इसको पत्ते को,
तो इससे लेटेक्स निकलेगा। लेटेक्स जब निकलता है पत्तों से वाइट विस्कस फ्लूइड तो उसको लिकोर कहते हैं, ठीक है। और लिकोर इज डेफिनेटली एंटी कैंसरियस कंपाउंड, सो दिस इज अ फाइकस लिकोर व्हिच इज आल्सो कॉमन ट्री इन दिस पार्ट। डिपार्टमेंट के लॉन में जो It is very important to make the environment neat and clean. You must follow these important points. Okay. On the front side, you see the Margilla National Park, where it is very clear, where there is a fragmentation of the rocks, where there is a degradation of the land, there is no vegetation. So the first threat to the biodiversity is the fragmentation of the rocks, degradation of the soil. When there is a degradation, either by soil erosion, either by waterlogs, either through a rainfall or natural disaster, the vegetation is vanished. So on other side, you see the dominant and the richest patches of the vegetation where the soil is protected. So the soil is foundation. When you protect the soil, you actually conserve the biodiversity. Here is clear difference: the fragmented soil and the protected soil, intact soils. Okay. Enchanting annulatum. The Enchanting annulatum, when we call it annulatum is basically the plant that grows for a single season, annuals. So the Enchanting annulatum is a native grass of the Margilla Hills National Park. Okay. Yes. Shape of this tree, which is also common tree in this Margilla Hills, that is Ziziphus nimularia. Ziziphus nimularia is a, you see the greenish fruits, that is edible fruits, and they are the rich source of vitamin C. The leaves are also important, that are used by the local community for reducing the diabetes, that is reducing the hypoglycemia. So the Ziziphus nimularia is rich source of vitamin C. It is also important leaves, and when you have to wash your hair, so it makes your hair very silky, neat, clean and shiny and durable. But among all these child and boys, I think their hairs are going to fall down. No, sir. ये जो होम्योपैथिक के मेडिसिन है ना, उसमें इसका सिरप भी यूज होता है उनाब के नाम से। अच्छा, उनाब के नाम से, ये शरबत उनाब। यस यस, उसका फ्रूट का डिफरेंस होता है, जिसके ग्लोबोज फ्रूट होते हैं और पत्ते ग्रीनिश होते हैं, वो ज़िज़िफस मेरिशियामा है। और जो पत्तों की दो डिफरेंट शेप्स होती हैं कि आप देखें, ग्रीनिश कलर और दूसरा जो है वाइटिश कलर है, ये देखें। तो ये निमुलेरिया स्पीशीज है। एक होता है बड़े बेर वाला, जिसको ममटी क्या तो वो जजुबा है। इसकी कोई 13-14 स्पीशीज है पाकिस्तान में। मेरी एक स्टूडेंट MS किया हुआ था, शी बिलोंग टू वजीरिस्तान, ज़िज़िफस फ्रॉम पाकिस्तान, राबिया। तो इसकी जो सर एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 3 वैन है, 3 वैन इसका डायग्नोस्टिक। क्लैपिंग करते आगे एक्टिव रहेंगे बच्चे। Sanatha is a common fuelwood species in the Margilla Hills National Park. So here you see, when you observe the Margilla Hills foothills, you just observe the greenish, the shiny leaves, that is the viscous leaves, that is Dodonia viscosa sanatha. And important grass, I have already informed you that this is the Enchanting annulatum, and on your head you see the Acacia modesta and Cressa opaca and Justacia retoda. So here you see 4 important species of Margilla Hills National Park. When you move upwards, you see these species are very dominant, common. On the other side, you see the reddish flowers, shrubby plants. I will show you in front. This is a Botfodia fruticosa, that is commonly known as a forest flames. Forest flames mean when it is a blooming in the red flower, it's just like the fire in the forest. So this is called as forest flames, Botfodia fruticosa. Forest flames, that is the, come up. Botfodia fruticosa, that is called as flame of the forest. That is the, when the leaves become reddish, so this is just like the fire in the forest. That is the whole forest is covered with this reddish leaf, Botfodia fruticosa. That is the forest flame, flame of the forest.
हम यूज करें इधर कोई आपको मैसेज लाइक डिसलाइक का नहीं करेगा, अल्लाह करेगा नेट ही ना है। Of the trees, so they are called as foliose lichen. Foliose lichens are those lichens which are attached to the surface of the woods. They are attached to the surface of the trees, so they are called as foliose lichens. When they are lichens attached to the rocks, they are called as crustose lichens. ठीक है, तो ये साथ साथ पढ़ना भी और रस्ते भी छोड़ना है, ठीक है। जो पीछे रह गए सारे आगे जाएंगे। Shrub that is found in the Margilla National Park is the Buxus papilosa. Buxus papilosa, which belongs to family Buxaceae. It's a very poisonous and toxic plant. If you eat the leaves or ingest the leaves and digest the leaves, sometimes fruits are very toxic, so it causes sometimes deaths. And mostly when you eat the leaves, it causes diarrhea and dysentery. So this is a poisonous tree or poisonous shrub of Margilla National Park. Another important grass that is exotic grass, alien grass, that is Atropogon contortus. Atropogon contortus is a brownish spike that stick to your cloths and dispersal mechanism. So here you see on the cloths of Atropogon contortus, these are the seeds dispersal, they are sticky. So this is the Atropogon contortus, that is poissy. This is another important grass that is indigenous to the Margilla hills, Vetiveria zizanides. Vetiver grass, and आपने सुना होगा परफ्यूमरीज का खास परफ्यूम जो होती है या सऊदी अरब में ऊद वगैरह यूज होती है, तो उसमें इसके कंटेंट जो है कॉस्मेटिक ग्रास, रूट्स इसकी कॉस्मेटिकल्स होती हैं। और ये जो आप जामे शरीफ पीते हो रोज़ों में, पता नहीं शायद आपने पिया है, तो जामे शरीफ के अंदर जो खस ग्रास होता है इसका एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, रूट्स एक्सट्रैक्ट, दैट इज खस रूट्स, यू नो। So this vetiver zizanides, a soil binder grass, very important for the production of the cosmeceutical product. Perfumery is a man-made perfume जो होती है, that's very expensive. ये वाले जो क्लाइंबर है इसका नाम है ओल्ड मैन बियर्ड, ठीक है ना, ये ओल्ड मैन बियर्ड और ये क्लाइंबर होता है। ये जब फैल जाता है ना, बिल्कुल ये जब मेच्योर हो जाते हैं ना, बिल्कुल बियर की तरह सर दिखाएं। ये ऊपर है। शेर भी पड़ा था ना, जहाँ नमी होती है, पानी होता है। तो ये आप देखें, ये ट्री है और ट्री की ट्रंक पर ये फ्यूमेरिया मॉस जो है ना, ब्रायोफाइट है। तो दिस इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ब्रायोफाइट इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, नमकियात प्रोवाइड कर रहा है, और ट्री इसको हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज अ सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म वेयर द प्लांट्स हैव अ फ्रेंडशिप, दैट द ब्रायोफाइट गेट द shade and habitat from this tree, and this tree get in reverse the moisture and minerals from this. So this is the bryophyte biology study. तो इसका नाम है क्रिप्टोलेपस, क्रिप्टोलेपस बुचानानी, फैमिली स्क्रिबिडेसी, इट्स अ क्लाइंबर। अच्छा, क्लाइंबर की दो टाइप्स होती हैं। लायनास जो होते हैं, दे आर वेरी कॉमन एपिफाइट, दे आर वेरी कॉमन इन आवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अगर आप कभी जिंदगी में मौका मिले ब्राजील का या मैक्सिको का या मलेशिया, थाईलैंड का या हनैन आइलैंड का, वहाँ का मेरा स्टूडेंट PhD कर रहा है सिराज बादर, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे आर द होम ऑफ द लायनास एंड एपिफाइट। लायनास वो प्लांट होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन जमीन के साथ होता है। व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द सॉइल, देयर रूट्स आर टू द सॉइल, दे आर कॉल्ड एज लायनास। एपिफाइट्स वो होते हैं जिनकी रूट्स भी दूसरे प्लांट्स पर ही डेवलप हो जाती हैं, उनको हम एपिफाइट्स कहते हैं। क्लाइंबर आर टू टाइप्स, दैट इज द एपिफाइट्स, they have no connection with the soil, and the lianas they have a connection with the soil. तो ये डिफरेंस है। और लाइनास जो होते हैं, वुडी लाइनास होते हैं, उनमें वुड भी, यानी जिस तरह ये लाइना कोई है तो उसकी ये देखे वुड भी बन रही है, देखा ये किस तरह
क्लाइम किया हुआ है। तो ये एक सिम्बियाटिक एसोसिएशन होती है, इकोलॉजी वगैरह म्यूचुअलिज्म आप सुनते हो, या सिम्बियोसिस, जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा हो रहा होता है। So this is another important aspect of the biodiversity, and we are now ऊपर भी देखो एक आपको क्लाइंबर नजर आ रहा है, पत्ता वाला दरख्त ऊपर नजर आया आपको, पत्ते नजर आ रहे हैं। तो ये जो प्लांट है ये कॉमन एपीफाइड या क्लाइंबर्स है आफ्ट मार्गिलेस का, इसका नाम है सिजम पिलास पेरायरा, बड़ा खूबसूरत सा नाम है, सिजम पिलास पेरायरा, मैनस परमेसी फैमिली का है। पेरायरीज ग्रास लैंड या इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। ये आपको पता नहीं, मुझे नजर आ रहा है, आपको आ रहा है ये इसके ऊपर है वो जो शीशम है ना, शीशम के ऊपर वो बड़े बड़े छोटे पत्तों वाला है। और ये वाला जो क्लाइंबर है ये वहाँ पर यूनानी नहीं है, ये क्रिप्टोडेफस बचन है, एस्क्यूबिडेसी। और एस्क्यूबिडेसी एक ऐसी फैमिली जिसमें लैटेक्स होता है, मिल्क होता है, ठीक है। अब ये उसकी लाइव एग्जांपल है। तो जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं उनमें लोग इनके साथ झूले भी झूलता है। टार्जन वाले ये जो खास कर इस तरह की जो आपको प्लांट मिलते हैं ना, जो टार्जन के पौधे हैं, लायनाज या एपीफाइड, ये आपको ज्यादातर मॉइस्ट एंड शेडी फॉरेस्ट में ज्यादा, जहाँ टेम्परेट होते हैं या ट्रॉपिकल जहाँ बारिश ज्यादा होती है, तो आपको नजर आते हैं इस तरह के। तो इन वन प्लेस यू हैव लर्न मेनी थिंग्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, कि इस एरिया में बर्ड्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, मेडिसिनल प्लांट भी हैं, ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं। तो यू टेक केयर दोस बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। और ये बॉटल, शॉपिंग बैग्स या वो जो लेजेस के वो क्या आप जो खाते हो वो फेंकने नहीं है, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है to make this environment neat and clean. चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हमारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।